So this is a parallel hybrid drivetrain structure in which both IC engine and the electric motor, okay, parallel means what? Ki two powers are working together, a parallel in nature, not in a series. They are working together in case of the series hybrid also, but they are in a series in line. Means one is a primary and second one is the secondary in case of the series hybrid. Okay, in terms of the like assistant type power was there in case of the series hybrid, but here the thing is parallel means both are having a same status, or we can say same designation, that is primary designation, designation while giving a power to road field. So that's why we are saying they are the parallel drive, okay, or parallel hybrid vehicle. So here we are using a electric motor as well as our IC engine to offer a drive to road wheels. Okay, so that's why both IC engine power and electric motor power is coupled somewhere. Okay, and that power, after that, as the output, after result, we can say after the resultant power of electric and the IC engine are forwarded through some box, or we can say that box is called as a mechanical coupler, and that coupler output will go further to road wheels through transmission or directly also. Okay, so this is the thing which in short, if we talk about the parallel hybrid vehicle, so we will see one by one the point which is quoted over here. The first thing, since both IC and EM are coupled to the drive shaft of wheels via two clutches. Okay, so this thing, this is the IC engine. Okay, and this is the conventional configuration, and this is the electric configuration. Electric configuration means the thing which electric motor who's responsible to give a drive to road wheels, and here conventional engine who's responsible to give a drive to road wheels. So both are, we can see they are parallel to each other, and entering their input is entering to the mechanical coupler, and mechanical coupler give you the output which is entering to the transmission. Okay, so that transmission will give you a drive to road wheels. As you can see in this figure, there is a battery, there is an inverter, this is a motor generator. Okay, the thing you have to remember here, the electric motor which is used over here in case of the parallel hybrid vehicle also is not only motor, it can also act as a generator. Okay, so this is a electric configuration and this is a IC engine configuration. Both are come together on this gear, and they are combinedly giving power to this road wheels. Okay, but just before entering their power to this thing, that gear, and power from electric motor to in this gear, there is a clutches are provided. Okay, so engine can get disengaged from this mechanical coupler, or motor generator can also disengage from this mechanical coupler. It depends कि कौन सा कब disengage होगा on the basis of the control system. जो भी है हमारा vehicle का control system, that will decide कि कौन सा mechanism और कौन सा हमारा जो propulsion system है वो किस टाइम पे disengage होगा from the system or from the road wheels. Okay, so this is decided by the control unit of the vehicles. Even though battery management system also interfere in that, because although your battery need to be supply power to run electric motor, so depending on the battery status, what is the whether it is a 50% or 60% or 100% charge. Okay, what is the load condition on the vehicle, whether it is climbing or whether it is declimbing, or whether uneven road surface, or whether extra load or heavy load added on the vehicle, or whether power requirement, sudden acceleration is there by the driver demand. Okay, on that basis the system will decide whether we have both electric or electric propulsion as well as IC engine propulsion work at the same time, or only IC is enough, or only more electric motor is enough. Okay, after that the propulsion power may be supplied ICE alone, by EM only, or by both IC and was I told you right now. Okay,
The EM can be used as a generator to charge the battery by regenerative braking. हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द रिजेनरेटिव ब्रेकिंग. सो जो भी मोटर यहाँ भी जो यूज हो रहा है, दैट मोटर कैन एक्ट एज अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग रीजनरेटर हम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से कंज्यूम करके मोटर ने रोड व्हील्स को दिया होता है, ड्यूरिंग द ब्रेकिंग और ड्यूरिंग द डीएक्सेलरेशन और ड्यूरिंग डिक्लाइंबिंग स्लोप से हम हिल डाउन कर रहे हैं, इन दैट टाइम जो भी इलेक्ट्रिसिटी है रोड व्हील्स का जो फ्री मोमेंट है उसको कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं थ्रू मोटर. उस टाइम मोटर हमारा जनरेटर करके एक्ट होगा. सो दिस इज द थिंग कि ये प्रोसेस हो रहा है in case of the braking, in case of the declimbing or in case of the deacceleration. Okay, after that इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लिया हमने कि फ्यूल टैंक है. फ्यूल टैंक में से जो भी फ्यूल है IC इंजन को जाएगा. IC इंजन विल डेवलप द पावर and it will send to the mechanical coupler. Same in case of the electric configuration also, battery is there as a fuel tank. As in case of the conventional vehicle, it will develop whatever the power stored in the battery in the DC form get converted into AC through power converter. That AC power is entering to the electric motor. Okay, sometimes in some electric vehicle there is a DC motor is there. Okay, so DC motor, brushless DC motor बोलते हैं हम उसको. Okay, BLDC बोलते हैं उसको. तो some in some vehicle BLDC also there. So whenever BLDC, that is brushless DC motor अगर होगा, so that time this power converter is only work as a step up transformer. Okay, so in this power converter there is a configuration of the rectifier as well as step up and step down transformer. जब बैटरी को चार्ज करते हैं हम, that time it will do a step down. जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिक मोटर के टुवर्ड्स पावर जाता है, दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. एंड इफ यू यूज अ BLDC मोटर, दैट इज ब्रशलेस DC motor, in that case you definitely require a DC to DC converter, not DC to AC converter. Okay, after that the mechanical coupler. Inside the mechanical coupler, if you look here, then you can see only one here, but it is not like that. Inside the mechanical coupler there is a clutches also present. Okay, because IC engine power entering into the mechanical coupler, and electric motor power also entering into the mechanical coupler, and after that it will give output. So दोनों का डायरेक्टली मिला के हम यहाँ नहीं दे सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर का RPM जो रहेगा वही IC इंजन का RPM रहा, देन एंड देन ओनली यू कैन गेट output RPM as the same. But if their RPM get differ, in that case there may be a chances of twisting of the shafts at which their RPM gets sum out. Okay, so to overcome this thing, there is a clutches are present, and that clutches are no need to be engaged or disengaged by the driver. It is completely electronic clutches which is controlled by the control system. Okay, so their engagement, their disengagement, and their partial engagement or partial disengagement is completely done by your electronic control system only. Okay, so inside the mechanical coupler there is a clutches are present, the gear reduction arrangement is present, and at the end you are getting the output to the transmission. This transmission is selective transmission by the driver. Driver can select first gear, second gear, third gear on their demand, or it can have continuous variable transmission also instead of the manual transmission. Okay, so this is a completely optional thing. Till the mechanical coupler, our thing is different in case of the parallel hybrid vehicle. After the mechanical coupler, transmission and the roll wheels or the propeller shaft or differential is the well-known thing which is a common for the conventional vehicle also. Okay, so this is our parallel hybrid vehicle, the configuration. Now we will see the advantage and disadvantage of the parallel hybrid. Advantage, if you talk about, the both engine and electric motor directly supply torque to the driven wheels and no energy from conversion occur. Okay, so in case of the previous, if you compare this thing with the series hybrid, you may remember कि जो सीरीज हाइब्रिड में क्या होता था कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी लगता था बैटरी को चार्ज करने के लिए, दैट गेट बोरोड बाय द जनरेटर, एंड दैट जनरेटर आर रन बाय योर इंजन. इज इट कन्वेंशनल इंजन जो रहता था, उसको कन्वेंशनल इंजन हमारे जनरेटर को ड्राइव देता था और एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता था. दैट इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू डेवलप अ बैटरी, यूज्ड टू चार्ज अ बैटरी. ओके, सो दिस इज द थिंग. हियर जो भी हमारा
कन्वेंशनल इंजन है दैट इज हैव अ डेजिग्नेशन एज प्राइमरी प्रोपल्शन सिस्टम, जो कि हम इलेक्ट्रिक मोटर को भी दे रहे हैं इस पैरेलल हाइब्रिड में। सो जो भी है कन्वर्जन हम मैकेनिकल का इलेक्ट्रिसिटी में नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली मैकेनिकल पावर हमारे इंजन का वो डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमारे रोड व्हील्स को दे रहे हैं। सो दिस इज द थिंग which is here in case of the parallel hybrid vehicle. After that compact, so जब कन्वर्जन नहीं हो रहा है, एनर्जी टू एनर्जी कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस है और अदर लॉसेस है ड्यूरिंग द कन्वर्जन वो स्किप हो जाते हैं, दैट विल बी नॉट देयर। ओके, सो यहाँ से लिया और डायरेक्ट दे दिया, बीच में किधर भी लॉसेस नहीं रहेंगे, जितना हमने डेवलप किया उतना ही हम भेजेंगे, बट सम लॉसेस रहेंगे, बट उसके आगे और हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे वो एनर्जी आफ्टर कन्वर्जन, देन वो क्या हो जाएगा, बीच बीच में लॉसेस होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट कन्वर्जन करके हम उसको डायरेक्ट इनपुट करके दे रहे हैं रोड व्हील्स को, सो लॉसेस वेरी लेस हो जाता है इन केस ऑफ द पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल। आफ्टर दैट compactness due to no need of generator and smaller traction motor. Okay, if you look in case of the series hybrid vehicle configuration, we have two electric machines, one is the motor and another is the generator. If we have a look of that diagram, block diagram, which I have displayed you in the previous or presented in the previous lecture, then you will see there are two electric machine was there. One is the motor, that is electric motor, and another is the generator. Generator is connected to the conventional engine and the electric motor is connected to the road wheels. Okay, so their work is different completely and they are taking their individual space, and the generator is quite bigger than the electric motor. So because of that the vehicle overall chassis or we can say overall footprint of our vehicle, that will be somewhat bigger as compared to the parallel hybrid vehicle, because that electric machines require a space for that. After that large flexibility to switch between electric and the IC power. अभी ये जो है लार्ज फ्लेक्सिबिलिटी इज नथिंग बट, जैसे आप इसको बोल सकते हैं, जब अगर लाइव एग्जांपल लेना है हमारा डे टू डे लाइफ का, जिस व्हीकल में सीएनजी किट फिट होता है या गैस किट फिट होता है, एलपीजी या सीएनजी किट फिट होता है, they can easily switch in between petrol and gas as per the availability of fuel in their tank. Okay, so in the same way here also, if your petrol tank is filled with the fuel, then you can run on the petrol. If your battery is full, then you can run on the battery. There is selective drive selection also there in or we can say selective configuration also present as per the driver demand in some vehicle, कि जो fuel ज़्यादा है उसके ऊपर run करो in that manner. Okay, so flexibility is there. After that compared to series hybrid, the electromotor can design less power. Compared to series hybrid, the electromotor can design less power than the ICE, as it is assistant traction. Only one electric motor generally is required. ओके, तो जो सीरीज हाइब्रिड में हम कंपेयर करेंगे इसका सीरीज हाइब्रिड का इलेक्ट्रिक मोटर अगर हम पैरेलल हाइब्रिड के इलेक्ट्रिक मोटर से कंपेयर करें, देन यू विल कम टू नो कि द थिंक द साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक और द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन केस ऑफ द पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल इज कंपैरेटिवली स्मॉल and as compared to the series hybrid, because in case of the series hybrid vehicle all the torque have to be contributed by a motor itself only, but here in case of the parallel hybrid vehicle whatever the necessary torque to propel the vehicle is can be borrowed by from electric motor as well as from IC engine. So no need to make a one machine only big, so they are distributing 50% power, they are taking the 50% power from IC engine and the 50% from electric motor, or 70% from IC engine and the 30% from the electric motor, or vice versa. So because of that the machine one of from those two will be a compact or the small. So this will be the advantage in case of our the parallel hybrid configuration. Now we will see a disadvantage of parallel hybrid vehicle. The disadvantage just a minute. Okay, the disadvantage of the parallel hybrid vehicle is the ICE doesn't operate in a narrow or constant RPM range and connected to the road wheels, thus the efficiency drop at low rotation speed. Definitely in case of the series hybrid vehicle, what was there, the engine, that is conventional IC engine, are running on a constant RPM, and their work the work of that engine was only to develop electricity
थ्रू जनरेटर। सो जनरेटर का कांस्टेंट लोड उस आईसी इंजन पे रहता था। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ चांस, देयर इज अ ह्यूज थिंक ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हमारा जो इंजन है वो एक ही कांस्टेंट लोड पे या कांस्टेंट आरपीएम में हम रन कर सकेंगे। बट यहाँ जब जब आपका रोड व्हील डायरेक्टली कनेक्ट होता है, रोड व्हील्स आप पे से आपका डायरेक्टली इंजन कनेक्ट होता है, दैट टाइम रोड व्हील्स को जो डायनामिक लोडिंग होता है, जो लोडिंग स्पैन बाय स्पैन या इंस्टेंट बाय इंस्टेंट चेंज होता है, बिकॉज जो भी रोड का रेजिस्टेंस रहेगा, रोडिंग रेजिस्टेंस, एरोडायनामिक रेजिस्टेंस, ड्रैग जो भी रेजिस्टेंस रहेगा, वो कंप्लीट रेजिस्टेंस इंजन के ऊपर रहेगा। इन दैट वे इंजन विल चेंज देयर आरपीएम एज पर द एक्सीलरेटर डिप्रेशन। ओके, सो इंजन का आरपीएम हम कांस्टेंट नहीं रख सकते इस केस में, क्योंकि ये डायनामिक लोडिंग हो जाता है इंजन का, क्योंकि रोड व्हील्स डायरेक्टली कनेक्टेड है इंजन को। सो इन दैट वे ये जो इंजन है वो इक्विवेलेंट पोल्यूशन करेगा व्हेन इट वर्किंग ऑन इंजन कंप्लीटली एज लाइक अवर कन्वेंशनल व्हीकल। अगर हम इस व्हीकल को 100% इंजन पे रन करेंगे, सो ये व्हीकल उतना ही पोल्यूशन करेगा जितना कन्वेंशनल व्हीकल करेगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द डिसएडवांटेज। नाउ वी विल सी नेक्स्ट थिंग, as the ice is not decoupled from the wheels, the battery cannot be charged at standstill. Definitely, समझो फॉर एग्जांपल इफ यू ये ब्लॉक डायग्राम हम रेफर करते हैं इस डिसएडवांटेज के लिए। व्हाट आई टोल्ड यू कि फ्यूल टैंक्स, सॉरी, आईसी इंजन का जो भी आउटपुट शाफ्ट है विच इज एंट्रिंग टू द मैकेनिकल कपलर, एंड यहाँ मैकेनिकल कपलर से हमारा आउटपुट शार्प निकल रहा है। जस्ट मिनट, पेंसिल ट्राई करता हूँ मैं, पॉसिबल। ओके चलो, ये है, यहाँ से शाफ्ट निकला इंजन का, यहाँ से इलेक्ट्रिक मोटर का, और इन दोनों के बीच में समझो एक गियर है आउटपुट का। ओके, एंड यहाँ एक समझो क्लच है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर का क्लच है। okay, whenever this clutch is engaged with this thing, okay, it will send the power to this output pulley, and whenever this clutch is engaged with this thing, it will send the power to this pulley। मतलब आउटपुट पुली से पावर निकलेगा वो जो ट्रांसमिशन में जाएगा। बट what the statement says, whenever as the engine cannot be decoupled from the output shaft of mechanical coupler, definitely output shaft of mechanical कपलर है उससे हम डिकपल नहीं कर सकते। अगर डिकपल करते भी है, कर भी सकते हैं, तो वो जो पावर आएगा ऐसी इंजन से आने वाला है, दैट विल नॉट कन्वे टू इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक आईसी इंजन जो भी है वो उसका गियर मेश होता है मैकेनिकल कपलर के आउटपुट शाफ्ट से। ओके, एंड इलेक्ट्रिक मोटर का भी आउटपुट गियर वो मैकेनिकल कपलर के आउटपुट गियर से मैच होता है, और वाया दिस आउटपुट गियर ऑफ मैकेनिकल कपलर इलेक्ट्रिक मोटर कैन बी हैव अ ड्राइव। ओके, सो इस भले स्टैंड स्टिल पोजीशन मतलब जब हम गाड़ी हमने पार्क किया है या सिग्नल पे है, तो दैट टाइम हमारा इंजन आइडलिंग पे चल रहा है, दैट टाइम हम जो भी पावर आइडलिंग में वेस्ट हो रहा है दैट कैन नॉट बी यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज भले हम आइडलिंग पे है, सिग्नल पे स्टॉप करके सिग्नल पे हमारा गाड़ी स्टैंड स्टिल है, इंजन आइडलिंग पे है, दैट टाइम हमने गियर रेशियो जो है न्यूट्रल सेलेक्ट करके इंजन रन हो रहा है, बट दैट टाइम हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है ट्रांसमिशन का वो रोटेट नहीं हो रहा है। ओके, सो उसके वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर को पावर नहीं जाने वाला उस टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिक आईसी इंजन का और इलेक्ट्रिक मोटर का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वो थ्रू ट्रांसमिशन है। ओके, जब ट्रांसमिशन रोटेट होगा दैट टाइम ओनली इलेक्ट्रिक मोटर कैन रोटेट एंड एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज स्टैंड स्टिल पोजीशन में आईसी इंजन भले आइडलिंग पे रोटेट हो या फुल आरपीएम पे रोटेट हो न्यूट्रल पोजीशन पे आपके गियर का, इट वोंट जनरेट अ सिंगल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बिकॉज IC engine का output shaft not connected directly to the electric motor, it is connected via transmission system। okay, so जब transmission घूमेगा then only electric motor can able to develop the electricity। so this is the thing which is have to be considered for the regenerative braking। okay, after that next disadvantage,
The mechanical configuration and all the control strategy are complex as compared to the series hybrid vehicle. Definitely, all the in the case of the series hybrid vehicle, if we compare the configuration, then here is very straightforward mechanism. इंजन यहाँ था, जनरेटर को कनेक्ट था, और एक ही चीज था जो ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ा था. अभी यहाँ क्या हो रहा है इन केस ऑफ द पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल, यह हो रहा है मैकेनिकल कपलर बीच में आ गया, which is contributing a power from this both electric motor and IC engine. ओके, एंड वो ट्रांसमिशन में पावर दे रहा है. ओके, सो दिस इज द थिंग वी हैव टू कंसिडर कि ये जो है वो गेयर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम जो भी है हमारा, इसके वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ड्राइव ट्रेन कॉम्प्लिकेटेड हमारा हो रहा है बिकॉज ऑफ द टू पावर अवेलेबिलिटी. Okay, which is doing propulsion work parallelly. Okay, if in case of the series hybrid also there was a two system was there, two propulsion system was there, but difference is that they are working in series, but यहाँ दो चीज parallelly काम कर रहे हैं. So because of that only उनका अगर पावर जो भी है उसको एक सिंगल बॉक्स में एज ए इनपुट यूज करके बाहर आउटपुट देना है, that time we have to do a think कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगा. Okay, so this is our disadvantage of our parallel hybrid vehicle. Now we'll see power flow control in parallel hybrid vehicle. जैसे कि हमने सीरीज हाइब्रिड में देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ पावर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल है. ओके, पावर फ्लो कंट्रोल है. सो वो हम देखेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट मोड है ड्यूरिंग अ स्टार्टअप और फुल थ्रोटल एक्सेलरेशन. ड्यूरिंग अ स्टार्टअप और फुल थ्रोटल. ड्यूरिंग स्टार्टअप मतलब जब हमें स्टैंड स्टिल पोजीशन से गाड़ी को मूव करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग द स्टार्टअप. एंड फुल थ्रोटल एक्सेलरेशन मतलब 100% एक्सेलरेशन है हमें चाहिए, मतलब फुल थ्रोटल पेडल हमने डिप्रेस किया है. बोथ आइस एंड ईएम शेयर द रिक्वायर्ड पावर टू प्रोपेल द व्हीकल. बोथ आइस एंड ईएम मतलब हमारा आईसी इंजन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर बोथ आर गिविंग ड्राइव टू ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके, इन केस ऑफ द पावर, इन केस ऑफ द स्टार्टअप एंड द एक्सीलरेशन कंडीशन. सो हमारा आईसी इंजन एंड द इलेक्ट्रिक मोटर दोनों पावर देगा. सो दैट्स व्हाई इंजन भी स्टार्ट रहेगा और हमारा इलेक्ट्रिक मोटर भी पावर ट्रांसमिशन देता रहेगा. सो दिस इज द थिंग which is running over here. Okay, after that typically the relative distribution between ICE and the electric motor is 80 to 20%. मतलब 80% पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा इंजन एंड द 20% पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, first mode of operation of our parallel hybrid vehicle. The second mode during a normal driving. Okay, normal driving मतलब अभी ये हो गया हमारा स्पीड अचीव हो गया है, एक कांस्टेंट स्पीड पे हमें रन करना है हमारा व्हीकल. सो द नॉर्मल हम उसको बोलते हैं क्रूजिंग स्पीड. सो क्रूजिंग रेंज जो हमारा है, दैट क्रूजिंग रेंज पे हमें व्हीकल रन करना है. सो द रिक्वायर्ड ट्रैक्शन और द पावर इज सप्लाइड बाय द आइस और ईएम. हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा या हमारा आईसी इंजन रहेगा, उससे वो क्रूजिंग रेंज पे पावर सप्लाई होगा. अभी वो डिपेंड करता है कि हमारा बैटरी फुल चार्ज है या बैटरी क्रिटिकल जोन में गया है नहीं गया, या फ्यूल लेवल इन द फ्यूल टैंक वो क्रिटिकल जोन में गया है नहीं गया. अगर फ्यूल लेवल इन द फ्यूल टैंक वो क्रिटिकल जोन में गया मतलब गाड़ी रिजर्व पे लगा है फ्यूल के रिस्पेक्ट में, एंड दैट टाइम आईसी इंजन विल गेट शट ऑफ. इफ बैटरी of electric motor is going into the critical zone 10% या 20% पे चला गया, that case battery will get shut off. Okay, so in that way another mode will be behave. So this thing यहाँ हमने दिखा है कि हमारा इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ आईसी इंजन चल रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो शट ऑफ है. इसको स्ट्रेट लाइन दिखा, एरो नहीं दिखाया और डायरेक्ट इधर एरो देगा तो इन दैट केस हमारा इलेक्ट्रिक मोटर चल रहा है. सो द सेम कॉन्फ़िगरेशन, वो उसके लिए हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया कि यहाँ देखिए क्लच हमारा क्लोज है. ओके, इंजन से पावर जा रहा है. ओके, सो दिस इज अ मैकेनिकल ट्रांसमिशन. ये जो हमारा मैकेनिकल कपलर, एमओटी इज नथिंग बट हियर मैकेनिकल कपलर. ओके, तो ये मैकेनिकल कपलर से हम पावर अंदर जा रहा है और ये हमारा गियर बॉक्स. बट जो भी है जो हमारा इलेक्ट्रिक, सॉरी एमओटी स्टैंड फॉर मोटर. ओके, सो दिस पी स्टैंड फॉर द दैट इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और वी कैन से जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कपलर करके प्रीवियस स्लाइड में देखा था. सो पी स्टैंड फॉर द पावर कपलर और पावर ट्रेन कपलर और पावर कन्वर्टर यू कैन से. ओके,
आफ्टर दैट जो भी पावर है यहाँ फेज में, तो इंजन से जा रहा है, बट जो भी बैटरी से वो पावर नहीं जा रहा है, मतलब बैटरी से पावर डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, सो मोटर रन नहीं करेगा इस टाइम। ओनली हमारा क्या हो रहा है, हमारा इंजन ही रन कर रहा है रोड व्हील्स को। एंड एट दैट टाइम इफ बैटरी अगर क्रिटिकल जोन में है तो रोड व्हील्स रोटेट होंगे, तो मोटर भी रोटेट होगा। इन दैट टाइम मोटर कैन बी एक्ट एज अ रीजनरेटर, सो बैटरी को चार्ज कर लेंगे उस टाइम। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड केस में अगर इंजन के लिए जो फ्यूल टैंक है वो रिजर्व लेवल पे चला गया, दैट टाइम क्लच ये वो ओपन हो गया हमारा क्लच, तो इंजन गेट डिसएंगेज फ्रॉम द ट्रांसमिशन सिस्टम and the battery will supply the electric the charge to the motor. Okay, and it will responsible to have a propulsion of the road wheel. So this is the thing during the cruising, dependence on the fuel, battery full hai ya fuel tank full hai, on that basis. Okay, after that the next mode, that is third mode of our parallel hybrid vehicle, that is during a braking and deacceleration or sloping down, जो कि हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग कंसेप्ट हम बोलते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम, so the EM act as a generator, electric motor is act as a generator because very early I told you कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर है it plays a dual role depending on the condition कि किस वे से हम कर रहे हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है कि राइट नाउ यू आर सपोज टू डीएसलेट एंड यू आर मेकिंग यू आर डूइंग अ ब्रेकिंग और स्लोपिंग डाउन, सो दैट टाइम नो नीड टू सप्लाई पावर फ्रॉम अवर प्रोपल्शन सिस्टम। इंजन से भी पावर देने की जरूरत नहीं है रोड व्हील्स को, और मोटर से भी पावर देने की जरूरत नहीं है। उल्टा जो भी काइनेटिक एनर्जी दैट वी आर going to make a zero, and in case of the sloping down, that time the condition or the position of the vehicle itself responsible to have a propulsion. Okay, so because of that क्या हो रहा है कि हमारा जो इंजन एंड द मोटर है सॉरी इंजन है उसको डेफिनेटली वो रन करने की जरूरत नहीं है, एंड मोटर ऑल्सो रन करने की जरूरत नहीं है। सो इन दैट केस मोटर विल प्ले अ रोल ऑफ अ जनरेटर, एंड जो भी रोड व्हील से पावर आ रहा है दैट विल enter into the motor and convert it into electricity and responsible to charge the battery. Okay, so this is the mode of braking, we can say regenerative braking during the deacceleration and the sloping down condition. Okay, now mode 4, during the braking or deacceleration the EM act as a generator to charge the, okay, this was also same, this is also same, change the battery via the power converter. What is this? Okay, something error is there. Okay, let it be. So fourth mode डिस्कस करेंगे, कुछ अलग रहेगा वो मोड, उसका इमेज नहीं है पीपीटी में, let it be. After that this is the example of the parallel hybrid vehicle. BMW 7 Series active hybrid is the example of the parallel hybrid. Okay, so now till here we have completed the parallel and the series hybrid vehicle.